हाय, मेरा नाम है दीपक तोमर. I work with global investment banks, consulting companies, and on many other interesting things for over 15 years. And during this period, I have had the opportunity of interviewing tons of people, hundreds of people, okay, for investment banking, hiring people in equity research and investment banking, going to the top MBA schools, top undergrad schools, IITs, BITS Pilani, so on and so forth. So, इसकी वजह से मेरे पास एक अलग स्किल है which is taking interviews और किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं लोगों से पूछने चाहिए so that we become more of a selector. Okay? याद रखिए इंटरव्यू एक प्रोसेस होता है सिलेक्शन का. It's not a process of rejection. तो इसीलिए आपको कोशिश करना है कि आप ऐसे रीजंस दें इंटरव्यूअर्स को ताकि वो आपको सेलेक्ट कर सकें. Rejections के रीजन नहीं देने, सिलेक्शन के रीजन देने. They are there to select you. Okay? Now, पहली चीज, just 99% of the interviews जो सेशंस होते हैं उसमें ये पहली चीज पूछी जाती है, introduce yourself. अब कोई ये सोचेगा भाई मेरा सीवी तो उनके पास पहले से है, मुझे शॉर्टलिस्ट किया हुआ है तो ये क्यों पूछ रहे हैं? The reality is, most of the interviewers they are people from business. उनको अपने काम भी करने होते हैं. 50 लोगों के सीवीज आए हैं उनके पास, उनको इंटरव्यू करने एक दिन में ओवर 2 days. सबके सीवी पढ़ने की हिम्मत नहीं होती, सबके सीवी पढ़ने का वक्त नहीं होता. ओके, एंड that's why you see many of them actually keep a copy of the CV when you are sitting in front of them so that they can refer to it, so that they can pick up things from the CV and ask you questions. तो पहला सवाल मोस्टली यही होता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. फनी है थोड़ा सा. नाउ एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये पहला सवाल बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी होता है. इट्स अ ग्रेट ओपनिंग. इंटरव्यूअर 50 क्वेश्चन वो उसके पास फ्लो नहीं होता. ऐसा डिसाइड नहीं है कि इस बंदे से मैं ये सवाल पूछूं, इसीलिए वो बोलता है कि चलो तुम शुरू करो, विदाउट सेइंग दैट. एंड व्हाट इंटरव्यूअर actually expects is that through that introduce yourself question, while you answer that, you will throw certain things at the interviewer जिसको पकड़ के वो दूसरे आगे के सवाल पूछेगा और इंटरव्यू प्रोसेस आगे बढ़ेगा. तो actually the responsibility of taking the interview in the right direction is upon you, and actually the interviewer is throwing the door open at you by asking this question. Boss, why don't you introduce yourself? Show us what you've got. और अपनी सारी इंटरेस्टिंग चीजें बताइए. तो पहला ये हो गया कि पहला सवाल ये है, फनी है लेकिन एट द सेम टाइम वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटीज. नेक्स्ट चीज की बात करते हैं कि इसका जवाब देना कैसे, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है. तो सबसे पहले जो चीज आपको अवॉइड करनी चाहिए, टू गो अबाउट ये मेरा नाम है, माय नेम इज दीपक तोमर, आई एम फ्रॉम हियर, माय फादर डज दिस दैट. नो, दैट्स नॉट वेयर यू गो. वो एक डिजास्टर है. अगर आप यही सब बातें कर देंगे तो इंटरव्यू सवाल क्या पूछेगा? आपको पापा के बारे में पूछेगा? नो. व्हाट यू हैव टू डू इज, अगर आप अपना नाम बताना चाहते हैं, फाइन, बट इमीडिएटली टॉक अबाउट थिंग्स दैट सेट यू अपार्ट. आप याद रखिए यहाँ पर आपका काम है उसको रीजन देना कि तुम मुझे सेलेक्ट करो. इंटरव्यू भी यही चाहता है. तो आपको यू हैव टू थिंक अबाउट, यू टॉक अबाउट वेरियस प्रोजेक्ट्स दैट यू मे हैव डन, इंटरेस्टिंग थिंग्स, or your personality type, your strengths, your weaknesses, any challenges that you faced in life, और उसको आपने उन challenges को कैसे ट्रम्प किया. तो लोगों के सीवी में ये हाइलाइट्स होती हैं. आपके करियर में, आपकी सीवी में भी कुछ हाइलाइट्स होंगी. उन हाइलाइट्स के बारे में बात करनी है when you're talking about yourself, because again that's a great opportunity. चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, I'm talking in, obviously you avoid Hindi, and it's a very formal process. So you have to speak in English in most of the cases. So if somebody asks me this question, I did this XYZ projects. For example, for me, I did a project on fintech where I engaged with a lot of fintech startups, over 300, and I was fully responsible for evaluating them based on certain criteria and bringing them in to work with my organization over a period of 2 years, and I ended up closing investments in those startups as well. Now, when I say this, the interviewer immediately gets excited. Oh wow, that sounds very interesting. Why did you tell us more about that?
what kind of startups came into the picture, so on and so forth. Now, the moment that happens, interviewer is piqued. उसका इंटरेस्ट पीक हो चुका है इसमें और वो उसके बारे में और जानना चाहता है. और इस पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा है, ये आपकी स्ट्रेंथ ये है, आप उसके बारे में बताते जाएंगे, वो जानना चाहेंगे और and then you keep giving them more. So what is happening in this world? You are impressing them big time. They are a slice of butter and you are slice of bread and you are the butter. आपने लगा दिया पूरा butter. It's not buttering I'm talking about. I'm just saying, see how you spread yourself over the slice of bread which are there. So figuratively speaking, to be honest. Now the point I'm trying to make here is that how you use that first segment of an interview, which is introduce yourself, the first few minutes, that's that's going to really count in how your interview will turn out. Okay. Now दूसरी चीज रियलाइज करने की जरूरत है कि इंटरव्यू के एक्चुअली 3 सेक्शंस होते हैं रफली. वन है ये पहला सेक्शन, पहले के 2-5 मिनट जहाँ वेयर यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, शुरुआती आइस ब्रेकिंग एक्सेट्रा. फिर एक मिडिल सेक्शन होता है जहाँ पर people look at your qualification, they will cross question you. There are multiple things people write on interviews, and interviewers want to make sure that those are you know what you have written on your CV, so they will ask about those things as well. पर अगर आपने पहले ही सेक्शन में इसको you have driven this interview in the direction of that you want, you're already winning. एक होता है लास्ट सेक्शन which is closing. Closing may be then by the time if the interview has already gone into the direction that you wanted, closing will be very smooth. There'll be smiles. There'll be nice ways of saying thank you, etc., etc., and people will like it. So you will immediately start to feel those. Okay. So ये 3 सेक्शन के बारे में एक आइडिया रखना जरूरी है. और अगर आप शुरुआत अच्छी नहीं करेंगे तो आपको ऑलरेडी लोग दिखने लगेंगे, थोड़ा कम बोलेंगे, थोड़े स्लोली क्वेश्चंस आएंगे, थोड़ा सोच के क्वेश्चंस आएंगे लोगों से. अगर 2 इंटरव्यूज बैठे हैं, शायद एक इंटरव्यू शांति हो जाए, पूछे नहीं, तो they are kind of showing with their body language that they're not really keen to take this forward. तो शुरुआत अच्छी करना बहुत जरूरी है. And I'm just harping on it over and over again. एक चीज और बताता हूँ, अगर आप ऐसे आपकी जो इंटरव्यू का मौका आया वो लास्ट में है, मान लो आपके पहले 20 लोग ऑलरेडी जा चुके हैं और आप you are like 23rd 24th person, 25 लोग हैं. By that time what is happening is that probably the interviewer has already made up his mind or her mind to hire 2-3 candidates, and ये एक औपचारिकता है कि भाई मुझे सारे लोगों को इंटरव्यू करना है. Now remember, by that time वो दिन की शुरुआत, दिन खत्म होने लगता है, उनको खत्म करना होता है, उनको जल्दी करना होता है कि भाई फॉर्मेलिटी खत्म करूं एंड मुझे फ्लाइट पकड़नी है, आई नीड टू क्लोज इट, आई एम टायर्ड, आई हैव बीन स्पीकिंग ऑल डे. You have to bear these things in your mind. But how do you trump it is what is important. उसको ट्रम्प करने का सबसे अच्छा तरीका है to make the interview interesting, to remind them, yes, you have already looked at 20 people, but I am even better. तो शुरुआत अच्छी तो करनी बहुत जरूरी है. It's a non-negotiable, but at the same time, you have to talk about your strengths, weaknesses furthermore, and you have to have that great attitude. You have to bring in extra energy to the interview to give it to the other guys who are sitting across you. Okay, you can't उनकी एनर्जी अगर वो थोड़े से ऐसे बैठे हैं तो आप भी ऐसे नहीं बैठ सकते, वो तो कचरा हो जाएगा, पूरा मतलब खत्म हो जाएगा इंटरव्यू वहीं पर. सो यू हैव टू डू द एक्स्ट्रा वर्क, जैसे एक अलग सी एनर्जी उसमें लाना जरूरी हो जाएगा. और एक बड़ी अच्छी चीज है बाय द वे, इसके नुकसान तो है लास्ट में इंटरव्यू करने के, पर एक फायदा बहुत बड़ा है. अगर आपने कुछ अच्छा किया वहां पे, अच्छा सा इंटरव्यू आपका अच्छा जा रहा है, तो उसमें क्या होगा, recency effect. There is something called recency bias, right? And every human being has that. अगर आपने अच्छा कर दिया तो boss, trust me, they will actually start forgetting the previous candidates and they will remember you because you are the latest one to have given them that amazing experience of talking to you. So remember कि towards the end, you will have to do the extra job. You will have to make their life easy of selecting. And also remembering that I am one of the last ones, I have the benefit of recency bias, so can I make use of it? And you must try to do that. देखिए ये गेम जो है ना, ये इंटरव्यू बहुत सारे लोग होते हैं, सिलेक्शन हो रहा होता है,
बहुत सारे लोग रिजेक्टेड फील करते हैं, लेकिन द फैक्ट इज कि सिलेक्शन हो रहा है, and out of 100 people, out of 50 people, everybody wants to be selected. But the thing is, have you thought about it? Have you strategized? Strategize करिए, success में.